हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त जेटी अग्रवाल। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए थे। लेट्स टर्न टू सम मोर एग्जांपल्स। लिखो और थोड़े से एग्जांपल। कल मैंने एक प्रॉब्लम होमवर्क दिया था, सॉल्व किया होगा, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन, लेकिन फिर भी मैं वो सॉल्व करके बताता हूँ। रीड द क्वेश्चन। इफ tan of theta is equal to 1/2, evaluate 2 sin of theta plus 3 cos of theta whole upon 4 cos of theta plus 3 sin of theta। नो प्रॉब्लम, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। रीड द क्वेश्चन। इफ tan of theta is equal to half, evaluate 2 sin of theta plus 3 cos of theta whole upon 4 cos of theta plus 3 sin of theta। अब in this example the position of theta is not mentioned। थीटा की पोजीशन मेंशन नहीं की है। whether theta lies in third quadrant or theta lies in first quadrant, it is not mentioned। Hello, so it is not mentioned whether theta lies in first quadrant or in third quadrant। You know, for third quadrant angle tan has positive value and for first quadrant also tan has positive value। no problem, मैं सॉल्व करके बताता हूँ। अरे तो क्या हुआ, मुझे पोजीशन की ज़रूरत क्या है? आई डोंट नीड पोजिशन ऑफ थीटा। क्यों? मैं बताता हूँ दिमाग यूज़ करके। मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? इसकी वैल्यू। इफ आई एक्सप्रेस दिस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ tan ऑफ थीटा, तो नो नीड ऑफ पोजिशन ऑफ थीटा। थीटा की पोजिशन की जरूरत ही नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। सी, इफ I want to evaluate its value, so divide by cos of theta in numerator, divide by cos of theta in denominator। Okay, now distribute this cos of theta for first term, for second term। If I distribute, क्या मिलेगा? 2 sin of theta upon cos of theta plus 3 cos of theta upon cos of theta whole upon, distribute cos of theta for first term, for second term। okay, so 4 cos of theta upon cos of theta plus 3 sin of theta upon cos of theta। okay, sin of theta upon cos of theta, this is tan of theta, this is tan of theta, so 2 tan of theta plus cos of theta get cancelled, simply 3 whole upon cos of theta get cancelled, 4 plus 3 sin of theta upon cos of theta, that is tan of theta। okay, and tan of theta I know very well, that is equal to 1/2। substitute 1/2 here, so this quantity is equal to 2 into 1/2 plus 3 whole upon 4 plus 3 into 1/2, and that is equal to 2 get cancelled, so this is what 1 plus 3, that is what 4 upon 1, take the LCM, 2 is the LCM, multiply by 2 here, 8 plus 3, that is what 11, this 2 goes up, 11 goes in the denominator, so 4 upon 1 into 2 upon 11, and that's what 8 upon 11, that is the answer। ये प्रॉब्लम CET में पूछ सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। ये प्रॉब्लम देखने के बाद स्टूडेंट्स सबसे पहले कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये थीटा की पोजीशन क्या है, whether it lies in first quadrant or it lies in third quadrant, it is not mentioned here। okay, so the whatever quantity whose value you want to calculate, that don't need position of थीटा, उसको थीटा की पोजीशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो टेक द केयर। ये क्वेश्चन CET में पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पुट इंपॉर्टेंट मार्क टू दिस क्वेश्चन। लेट्स टर्न टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। लिखो, रन ऑन नेक्स्ट पार्ट।
लिखो क्वेश्चन नंबर 11, इफ cos of theta is equal to 3/4, pi is less than theta is less than 3/4, then find value of 4 cosec of theta plus 5 cos of theta, 5 cos of theta। मैं सॉल्व करके बताता हूं। रीड द क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? cos of theta is equal to 3/4 and theta lies in which quadrant? Pi means 180 degree, 3π/2 होगा, 3π/4। This is not possible, this is not possible। In book it is misprinted, यहाँ 2 होना चाहिए। Pi means 180 degree, 3π/2 means 270 degree, 270 degree। In your book it is given to be 4, which is wrong one, because 3π/4 is 135, which is not correct one। 135 is not greater than 180, that's why। Okay, see, if cos of theta is equal to 3/4, theta lies in third quadrant, okay, third quadrant, then find value of, कुछ तो गड़बड़ है बॉस। It is not cos of theta, it is cot of theta। Cot of theta is equal to 3/4। Yes, if cot of theta is equal to 3/4 and pi is less than theta is less than 3π/4, π/4 की बजाय π/2 चाहिए, then find the value of this quantity। मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। 4 cosec of theta plus 5 cos of theta। See, this problem says what? You need of cosec of theta and cos of theta। If you calculate these two values, you will get the answer। मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा, मैं बताता हूँ। ये देखो, एक मेथड अब तक मुझे सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की डेफिनेशंस पता है, नो प्रॉब्लम। ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ स्टैंडर्ड सर्कल, नॉट स्टैंडर्ड सर्कल, अ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन। Okay, next, theta lies in third quadrant, so start to rotate 90 degree, 180 degree and rotate it further, so sustain the rotation here, so this is the angle theta। Now cot of theta, what is the definition of cot of theta? Cot of theta is equal to, see, tan of theta is equal to y upon x। Cot of theta means reciprocal of tan of theta, so its definition is what? X upon y, x upon y। so x 3 कंसिडर करूं, y 4 कंसिडर करूं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बिकॉज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या है? द पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट मस्ट बी नेगेटिव, नेगेटिव। सो इसका मतलब क्या हुआ? x कोऑर्डिनेट मस्ट बी -3 एंड y कोऑर्डिनेट मस्ट बी -4। नोट द स्टिक, ध्यान से देखो। ओके, सो दिस इज x कोऑर्डिनेट इज -3, y कोऑर्डिनेट इज -4। इट इज करेक्ट, -4। नाउ कैन आई कैलकुलेट रेडियस ऑफ द सर्कल? yes, I can calculate। this is the origin 0 0, let's apply distance formula and calculate radius। r is equal to root of 0 minus -3, okay, plus 3, 9 plus 0 minus -4 plus 4 whole square, that is equal to 16, and that is equal to root of 25, so that is what? 5। it is correct। now whose value to be calculated? 4 cosec of theta। 4 cosec of theta मतलब 1 upon sin of theta plus 5 cos of theta, that is equal to 4 sin of theta। sin of theta is equal to how much? y coordinate upon radius of the circle, radius is equal to 5, so 1 upon sin of, so sin of theta is equal to -4 upon 5, -4 upon 5, therefore 1 upon sin of theta is equal to 5 upon -4, so into -5 upon 4 plus 5 into cos of theta। can I calculate cos of theta? yes, cos of theta is equal to x coordinate upon
radius, that is minus 3 upon 5. So substitute here, minus 3 upon 5, 5 get cancelled, 4 get cancelled, minus 5 minus 3 and that is equal to minus 8. This is the answer. देख लो. Okay, so this is the answer. किसी को डाउट्स हो मुझसे पूछो. लेसन टू नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट देखते हैं. लेसन टू नेक्स्ट पार्ट, प्रॉब्लम नंबर 10 का 11 का आंसर. -8, it is correct. Okay, listen to next part. Question number 12. Question number 12. Read the question. Question number 12. See. Read the question number 12. Find the Cartesian coordinates. Find the Cartesian coordinate. Cartesian coordinates. Coordinates of points whose polar coordinates are 3, 90 degree. First question. Second question 1, 180 डिग्री. मैं सॉल्व करके बताता हूँ. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. अब व्हाट डू बाय पोलर कोऑर्डिनेट? पोल आपको पता है. ओके, अब यहाँ सपोज दिस इज अ पोल. ओके, यहाँ एक खंबा, पोल मतलब खंबा, एक खंबा गड़ा हुआ है. ओके, एक खंबा गड़ा हुआ है. ओके, सो यहाँ एक रोप बाइंड किया. ओके, ऐसे एक रस्सी बांधी है और मैं ऐसे इसको घुमाऊंगा. ओके, व्हाट इट विल ट्रेस? इट विल ट्रेस अ सर्कल. ये क्या करेगा? एक सर्कल ट्रेस करेगा. ओके, एज लाइक दिस वन. सो दिस इज अ फिक्स पॉइंट एंड आई विल रोटेट इट लाइक दिस. ओके, इसको मैं ऐसे रोटेट करूंगा. ओके, सो हियर व्हाट हैपन? दिस इज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. This is a rectangular coordinate system. See here. Suppose this is a circle. Yeah, it appears as a circle. Yeah. Suppose this is the circle. Okay, see, this is the initial arm. इसको बोलते हैं initial arm. I start to rotate it in anti-clockwise sense and I sustain the rotation here. I sustain the rotation here. This angle is theta. Okay, now suppose this terminal arm cuts the circle at point P whose coordinate are x, y. X, y. Now I defined cos of theta is equal to क्या बताया था मैंने? cos of theta is equal to x coordinate upon radius of the circle, x upon r. Okay, next sin of theta is equal to, I defined as y coordinate upon r. It is correct. Now shift r on left hand side, so r cos of theta is equal to x. Shift r here, so sin of theta is equal to y. Okay, say in mathematics this x comma y are known as Cartesian coordinates. इसको बोलते हैं Cartesian coordinates. Okay, here x I converted in terms of theta and r. Okay, theta and r. Okay, if I specify this point also denoted as radius of the circle comma angle, this theta, and these are known as what? Polar coordinate. इनको बोलते हैं polar coordinate. Okay, so here radius of the circle is given to be 3 and
theta is equal to 90 degree. So substitute this r and theta in this formula and you will get the Cartesian coordinate. Okay, so here r is equal to 3 into cos of 90 degree is equal to x. R is equal to 3 into sine of 90 degree is equal to y. Okay, cos of 90 degree is equal to how much? Cos of 90 degree is equal to 0. 3 into 0 is equal to x. 3 into sine of 90 degree is equal to 1. Okay, that is what? Y. Therefore 0 into something 0, x is equal to 0, y is equal to 3. So these are the Cartesian coordinates. So Cartesian coordinates of the point P are 0, 3. 0, 3. See, this is known as polar coordinate. O is known as pole. O को बोलते हैं pole. Okay, the fixed point about which I am rotating the arm. That is what? This is the pole. Okay, so this theta is variable. Theta is variable. Note it, r is not the variable. See, here if I change theta, the coordinates of point x, point P changes, means x and y changes. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दो वेरिएबल होते हैं, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट. लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है? ओनली वन वेरिएबल इज देयर एंड दैट वेरिएबल इज थीटा. वो वेरिएबल कौन सा है? थीटा है. सो टू कन्वर्ट दिस टू वेरिएबल इन वन वेरिएबल वी जनरली यूज दिस पोलर कोऑर्डिनेट. ओके, ये पोलर कोऑर्डिनेट का यूज किया जाता है, बट वी विल नॉट यूज टू मच in our syllabus. Okay, so but you should know what is the meaning of this one. This is what? Polar coordinate. Okay, or some people write down it as P has coordinate r cos of theta comma r sin of theta. Okay, so here theta is the angle made by the terminal arm with x positive direction of x axis, and what is r? Radius of the circle. So these are, this and this both are equivalent, and these are known as what? Cartesian coordinate. Okay, now turn to problem number 2. Okay, here radius is equal to 1 and theta is equal to 180 degree. R is equal to 1. Let's substitute r is equal to 1 here and theta here. So therefore Cartesian coordinates are x is equal to 1 into cos of theta. Theta means 180 degree, comma y is equal to r. R means what? 1 into sine of 180 degree. Cos of 180 degree is equal to minus 1. 1 into minus 1. Y is equal to sine of 180 degree is 0. Okay, so 1 into 0. So this is what? Minus 1. Y is equal to 1. Means you can confirm the terminal arm. This is a angle 180 degree. Okay, this is a terminal arm. It cuts the circle at this point and its coordinate are minus 1, 0. Minus 1, 0. So these are the Cartesian coordinate. Okay, next और एक प्रॉब्लम मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज यू आस्क टू कैलकुलेट 3,30 degree. 3,30 degree. Can you calculate? I can calculate. Okay, कैसे कैलकुलेट करोगे? रेडियस इज इक्वल टू 3, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. सो x इज इक्वल r. r इज हाउ मच? 3 into cos of 30 degree, comma y is equal to r means what? 3 sine of 30 degree. It's correct. Okay, cos of 30 degree is equal to how much? √3 by 2. 3 into √3 by 2, and sine of 30 degree is what? Half. So y is equal to 3 upon 2. So therefore Cartesian coordinate is theta is equal to 30 degree, theta is equal to 30 degree. Okay, and radius is equal to 3. Then coordinates of point P are, P के coordinate क्या मिलेंगे? x coordinate r, x को 3√3 upon 2, 3√3 upon 2, comma 3 upon 2.
these are the coordinates. मैं और दो प्रॉब्लम होमवर्क दे रहा हूँ. सेम, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. लिखो 4, 60 डिग्री. नेक्स्ट 5, 120 डिग्री. एंड वन मोर प्रॉब्लम 3, 240 डिग्री. ये 3 प्रॉब्लम फॉर होमवर्क. ओके, ये 3 प्रॉब्लम फॉर होमवर्क. लेट्स टर्न टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन हम देखते हैं. रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन लिख लो. सो राइट ऑन वन मोर एग्जाम्पल लिखो. नाउ विल स्टडी कॉन्वर्स स्टेटमेंट. उल्टा स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे. फाइंड द पोलर coordinates of the points whose Cartesian coordinates are first 5, second 1, √3, next -1, -1, next -√3, 1. One by one we will solve all the problems. सारे चारों पॉइंट्स के पोलर कोऑर्डिनेट्स हम कैलकुलेट करेंगे. See, suppose this is a rectangular coordinate system. Okay, now what is the meaning of this one? इसका मीनिंग क्या है? These are the Cartesian coordinate. Means x coordinate is 5, y coordinate is 5. Now obviously this point belongs to first quadrant because x coordinate are positive, y coordinate are positive. If point has plus coordinate, such point lies in first quadrant. Okay, so 5, 5. Suppose this is a circle. Okay, so this is a 5, 5. Okay, very fine. Okay, so अब क्वेश्चन ऐसा है, माई इंटेंशन इज व्हाट? टू डिटरमाइन रेडियस एंड टू डिटरमाइन दिस एंगल. ये एंगल कैलकुलेट करना. दो बातें कैलकुलेट करनी है, एक रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दूसरा एंगल मेड बाय द टर्मिनल आर्म इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ओके, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं? r, थीटा. r रेडियस एंड थीटा इज व्हाट? थीटा इज द एंगल मेड बाय द टर्मिनल आर्म इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ. सी, रेडियस कैलकुलेट करना एकदम सिंपल है. हाउ टू कैलकुलेट? दिस इज द ओरिजिन 0, 0. अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला. रेडियस इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 minus x1 whole square is 5 minus 0 whole square plus 5 minus 0 whole square, that is equal to root of 5 square 25 plus 25, and that's what? Root of 50, and this what? 5 root 2. Very fine. आंसर आ गया. ये देखो, अब मैंने क्या बताया था? मुझे थीटा कैलकुलेट करना है. थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? It is very clear from this figure. It belongs to the first quadrant. The point belongs to first quadrant. मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल किसके बीच में होना चाहिए? 0 to 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए. तो मैं कैलकुलेट करता हूँ. सी, मैंने क्या बताया था? इफ r, थीटा आर द पोलर कोऑर्डिनेट, देन दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? r cos of theta, r sin of theta. Means x is equal to r cos of theta and y is equal to r sin of theta. अभी जस्ट मैंने बताया था. ओके, हियर x coordinate is given to be how much? x coordinate is 5. Radius, how much I calculated? 5 root 2 into cos of theta. Okay, divided by 5 root 2 on both sides. 5 root 2 on both. 5 root 2 get
cancel, this 5 get cancel, 1 by root 2 is equal to cos of theta. Very fine. Okay, next, similarly y coordinate is equal to how much, 5, and radius is equal to 5 root 2 into sine of theta. 5 get cancel, 1 by root 2 is equal to sine of theta. अब खुद को क्वेश्चन पूछो, ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए, ऐसा कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है जिसके लिए साइन और कॉस दोनों की वैल्यू इक्वल होती है. दैट एंगल इज 45 डिग्री, बिकॉज कॉस ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 by root 2, sine of 45 degree also root 2. So therefore theta is equal to 45 degree. In terms of radian it is pi by 4. Therefore coordinates of the point are how much? Point के coordinate कितने मिलेंगे? Point के coordinate कितने मिलेंगे? Radius how much I have calculated? 5 root 2 comma pi by 4. This is a Cartesian coordinate. Okay, these are the coordinates, radius comma theta. Okay, let's turn to problem number 2, 1 comma root 3. मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ फिर से एक बार. रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. सी, ये लिख लिया होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग ये लिख लिया होगा. करतोय का सगळ्यांना समझ रहा है क्या सभी को? लेट्स टर्न टू नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ. सी, क्या क्वेश्चन है? द पॉइंट इज 1 comma root 3. 1 comma root 3. Determine the angle for which the line, the terminal arm cuts the circle at the point 1 comma root 3. 1 comma root 3. Okay, here x coordinate is positive, y coordinate is positive, means obviously terminal arm lies in first quadrant. ये जो terminal arm है ये कहाँ होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा. सो थीटा मस्ट बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, वेरी फाइन. यहाँ x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू रूट 3. इफ एंगल इज थीटा, टर्मिनल आर्म मेक्स एंगल थीटा एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज r, देन x इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने? r cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, r साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू रूट 3. अब मेरे गले में सबसे पहले क्या अटका हुआ है? टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ द सर्कल. कैलकुलेट कर लो ना बाबा, अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला. इफ आई अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, रेडियस इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 minus x1 means 1 minus 0 whole square plus root 3 minus 0 whole square, and that's what root of 1 square 1 plus root 3 whole square 3, and that's what root of 4, and that's what 2. Radius is equal to 2. Now substitute r is equal to 2 here. If I substitute r is equal to 2 here, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 cos of theta is equal to 1, 2 sin of theta is equal to root 3 divided by 2. Cos of theta is equal to 1 by 2, sin of theta is equal to root 3 by 2. It's very fine. Now for which angle sin of theta has value root 3 by 2? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए 60 डिग्री. साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 by 2 and cos of 60 degree is equal to 1 by 2. Therefore theta is equal to 60 degree. Means this is equivalent to radius of the circle is equal to 2 and theta is equal to pi by 3. These are the polar coordinates. Okay, अगला प्रॉब्लम. लेट्स टर्न टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला प्रॉब्लम हम देखते हैं. रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Read the next question. See, -1, -1. अब कोई बताएगा मुझे -1, -1. This point belongs to third quadrant. It belongs to third quadrant. It belongs to third quadrant. So the point is -1, -1. Step number 1, calculate radius of the circle. Distance of origin from the point, that is the radius of the circle. Radius is equal to root of -1 -0, that is what, 1, plus -1 -0, that is -1 whole square, that is what, 1, and that is equal to root 2. It is correct. So radius is equal to root 2. रेडियस मिल गई. अब मुझे थीटा कैलकुलेट करना है. मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. सपोज दिस एंगल इज थीटा. नाउ यू नो एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा. इफ थीटा इज द एंगल and r is the radius. See, if r comma theta, these are the polar coordinate. Then what is the relationship between polar coordinate and Cartesian coordinate? X comma y are Cartesian coordinate. इनको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट. ओके, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट? x इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. ओके, so here radius is equal to root 2. Substitute here, x is equal to root 2 into cos of theta, y is equal to root 2 into sin of theta. Very fine. Okay, अब theta, note it, theta lies in third quadrant, and I told you for third quadrant angle only tan has positive, means sin and cos both must be negative. No problem, मैं कैलकुलेट करता हूँ. सी, डिवाइड बाय रूट 2 ऑन बोथ साइड्स. ओके, डिवाइड बाय, या फिर एक काम करो, मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करो. अब कॉस ऑफ थीटा कैसे कैलकुलेट? नो प्रॉब्लम. ये देखो, x इज इक्वल टू हाउ मच, -1. सब्सटीट्यूट है -1 इज इक्वल टू रूट 2 कॉस ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू -1 रूट 2 साइन ऑफ थीटा, डिवाइड बाय रूट 2 cos of theta -1 by 2 -1 by root 2 is equal to sin of theta. Okay, now for which angle cos has value -1 by root 2, sin also has value -1 by root 2, then obviously this is what, 180 degree plus 45 degree, 180 degree plus 45 degree, and there are 225 degree. So therefore this implies theta is equal to 225 degree. 225 degree I can convert in radian में convert कर सकता हूँ. Okay, how to convert in radian? This quantity is what, pi plus pi by 4, and that is equal to 5 pi by 4. Okay, so therefore Cartesian coordinates कितने मिलेंगे? Radius of the circle is equal to how much? Root 2, and theta is equal to 5 pi by 4. This is a Cartesian coordinate. Okay, so let's turn to next question number 4. Read the question number 4. Point number 4, -√3, 1. कोई बताएगा मुझे in which quadrant this point lies? This lies in फोर्थ क्वाड्रेंट. ये कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है. इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. Oh, I'm so sorry. I committed the mistake. I'm so sorry. ध्यान चाहिए. -√3, 1. This point belongs to second quadrant. I'm so sorry. It lies in
because x coordinate is negative, y coordinate is positive. So this is the terminal arm. Okay, 1 comma, so this is the terminal arm. This angle is theta. Okay, here this point is how much? Minus root 3 comma 1. This center is origin. Okay, distance is equal to, radius is equal to root of minus root 3 minus 0 minus root 3 whole square plus 1 minus 0 1 square, that is equal to root of this one 3 plus 1, that is what, root of 4, and what it is correct. Okay, if this angle is theta and radius is r, so what is the relation between polar coordinate and Cartesian coordinate? X is equal to r cos of theta, y is equal to r sin of theta. This is the relation. ये relation है. Okay, तो no problem. अब मुझे बताओ, here x coordinate is equal to क्या? minus root 3 into r, that's what, 2 cos of theta. Y is equal to what? 1 is equal to radius is what? 2 sin of theta. It is correct. Now divided by 2. Okay, cos of theta is equal to minus root 3 by 2 and sin of theta is equal to 1 by 2. Okay, अब मैंने टेबल बताया था, रेफर द टेबल, जल्दी रेफर द टेबल. और मुझे बताओ थीटा, साइन ऑफ थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल जिसके लिए साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 1/2 है. यदि टेबल याद नहीं होगा, यू कैन कंस्ट्रक्ट इट इंस्टेंटली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. कैसे? राइट डाउन 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 टेक स्क्वायर रूट. So this quantity is what? 0, 1/2, 1/√2, 1/√3/2. This is what? 1. Run the values in reverse order. That's what? √3/2, 1/√2, and this what? 1/2, and this what? 0. If you write down, you'll get the answer. Okay. This is the value of sine of 0. This is sine of 30, sine of 45, sine of 60, sine of 90, sine of 120, sine of 130, sine of 150. So sine of 150 is equal to half. So theta is equal to 150 degree. It is correct. ये भी CET में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? If coordinates Cartesian coordinates of the point are minus √3, 1, then find the polar coordinates of the point. ये CET में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Okay, so polar coordinates of the point are how much? Radius is equal to 2 and theta is equal to 150 degree. It is correct one. किसी को doubts हो मुझसे पूछो. Let's turn to next part. No objection. Shall I proceed? Let's turn to next part. मैं 2 प्रॉब्लम होमवर्क दे रहा हूँ, सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप करना है. ओके, द पॉइंट आर से minus √3, -1. नेक्स्ट और एक पॉइंट ले लो, द पॉइंट इज 2, 2√3 2 -2√3. या चलेगा क्या? इट्स ओके. सो दीज आर द 2. फाइंड polar coordinates of the point. -√3, -1, and second point is 2, -2√3. Yeah, it's correct. Yeah, okay. Let's turn to next part. किसी को कोई
objection. So this is something about definition of trigonometric ratios. अब तक मैंने क्या बताया, मैं समरी एक्सप्लेन करता हूँ. This OX is known as initial arm. If I start to rotate it in anti-clockwise sense, if I start to rotate it in anti-clockwise sense, इसको मैंने ऐसे anti-clockwise sense rotate करना शुरू किया. If I sustain the rotation here, then this terminal arm cuts the circle at point P. Okay, the Cartesian coordinate of point P are x, y. Suppose this terminal arm makes angle theta in positive direction of x-axis, then we define sine of theta is equal to y upon r. We define cos of theta is equal to x upon r. We define tan of theta is equal to y upon x. We define cosec of theta as reciprocal of sine of theta, reciprocal of sine of theta, and that is equal to what? Reciprocal of this quantity r upon y, r upon y. We define one more trigonometric ratio, and that is what? Sec of theta, and that is a reciprocal of cos of theta, reciprocal of cos of theta, and its value is r upon x. Next, reciprocal of tan of theta is known as cot of theta. Okay, cot of theta, that is reciprocal of tan of theta, and it is defined as इसका reciprocal, that is x upon y. Here y should not be 0, x should not be 0, y should not be 0, y should not be 0. अब मैंने साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा का ग्राफ प्लॉट करके बताया था. ओके, कोसेक ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा, इसका ग्राफ मैंने प्लॉट करके नहीं बताया. टाइम बिंग आई विल नॉट एक्सप्लेन द ग्राफ ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. वक्त आने पर मैं इनका ग्राफ भी बताऊंगा. ओके, या फिर बता देता हूं मैं. आई विल एक्सप्लेन द ग्राफ ऑफ द कोसेक एंड साइन. मैं ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूं. सी व्हाट हैपेंड, दिस इज अ x axis, this is y axis, this is y axis. Here is somewhere pi by 2, here is pi, here is 3 pi by 2, here it is 2 pi. Pi by 2 means 90 degree, 180 degree, 180 degree, 270 degree, 360 degree. Somewhere here is minus pi by 2, here is somewhere minus pi, here is somewhere minus 3 pi by 2, here is somewhere minus 2 pi. Note it, this theta is independent variable. Okay, अब कोसेक ऑफ थीटा का ग्राफ कैसे होगा मैं बताता हूँ. ओके, कोसेक ऑफ थीटा का ग्राफ विल बी ऑफ दिस काइंड. लाइन भी नहीं मारने आता, कितने गरीब आदमी हैं. दिस इज y इज इक्वल टू 1, this is y is equal to minus 1. Okay, so the graph of at pi by 2, the value of cosec is 1. So this is the graph of the function. These are the graph. These are the graph. Interesting graph है.
दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक, ये कोसेक का ग्राफ है। नोट इट, कोसेक की वैल्यू कभी भी 1 और -1 के बीच में नहीं होती। द वैल्यू ऑफ कोसेक ऑफ थीटा इज द वैल्यू ऑफ कोसेक ऑफ थीटा इज लेस देन और इक्वल टू -1 और कोसेक ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। नोट इट, ओके। कोसेक ऑफ थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में बिल्कुल नहीं होती। कोसेक ऑफ थीटा इज डिसकंटिन्यूअस एट पाई 2 पाई इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। ये 12th स्टैंडर्ड का पार्ट है, सॉरी ये 11th का ही है। वी विल स्टडी इट इन एंड पार्ट, ओके। सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट which are integer multiple of pi, okay। so this is a graph of draw कर लो, okay। so ठीक है, मैं आज यहीं स्टॉप करता हूँ। once again I'll continue